ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज समर्थ और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन थोड़ा बेसिक इसका मतलब है कि जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो जैसा कि मैं बोल रहा था, a will be called the leading coefficient and c is the absolute constant term, the absolute term of fx, and also it's a constant basically. So अगर अपना the a term, the first leading coefficient जो a है हमारा, if a becomes zero, then y is equals to bx plus c is called a linear polynomial. Okay, so we do not have a quadratic term or a square x square term here, right? Left. So bx plus c would look like a linear polynomial. Okay, this is a bit of the theory. And standard appearance, let's talk about what does the standard appearance of a polynomial look like. So standard appearance of a polynomial, standard appearance of a polynomial जो होती है वो ऐसे होती है, fx is equals to an xn plus an n minus 1 x to the power x minus 1 and so on till a to a0. You understand, right, what I'm trying to convey here? हम क्या कहना चाह रहे हैं, यू अंडरस्टैंड राइट, क्या फॉर्मेट है एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का। अगर इसी तरीके से हम हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो व्हाट वुड इट लुक लाइक? लेट अस राइट, जस्ट अ मिनट, या सो व्हाट वुड इट लुक लाइक? a2 x to the power 2 plus a1 x to the power 1 a0 x to the power 0. Okay, okay, now moving on. तो डेटा कैन इसमें ऐसे दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 6 टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं, राइट? और उनकी सबकी अलग अलग कंडीशन है, ठीक है? सो अगर अपन एनालाइज करें हर एक कंडीशन को, तो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट ग्राफ कैसा है? जब हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ए, वो भी ग्रेटर देन 0 है, और हमारा जो डी, यहाँ पे डी क्या है? डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं उसको, रूट्स निकालने वाला। लाइक आई विल राइट द फॉर्मूला, सो यू विल गेट डी इज इक्वल्स टू root of d square minus 4ac here. This is our d. So if this d is greater than 0 and the a part is also greater than 0, इसका मतलब ये है, a का मतलब 0, a greater than 0 का मतलब ये होता है कि जो आपका ग्राफ है वो ओपन होगा बट अपवर्ड्स फेसिंग होगा। लाइक अपवर्ड आई मीन दिस, ऐसा होगा। आप खुद देख सकते हैं, अगर इफ यू पुट इंफिनिटी इन दिस इक्वेशन एंड a is positive, then your y would also go to infinity, right? And if you put x is equals to minus infinity, in that case also जो y है वो पॉजिटिव इंफिनिटी पे ही जाएगा। तो a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड ओपनिंग होगा, राइट? अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब हमारे पास एक ही रूट है इक्वेशन का, दो रूट्स नहीं है। रूट का मतलब, अभी रूट में बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा शायद। रूट मतलब जहां पे आपका जो y है उसकी वैल्यू 0 होती है, किस x पर आपकी y की वैल्यू 0 होती है। ओके,
अगर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है मतलब क्या होगा कि आपकी रूट्स इमेजिनरी है, यानी कि आपके रूट्स है ही नहीं इक्वेशन के, आपका पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, वो हमेशा पॉजिटिव है आपका ग्राफ। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पार्ट, जब हमारा ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव मतलब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है और नेगेटिव है, उसका मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ होगा हमारा। डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ का मतलब अगर हमारा एक्स इन्फिनिटी के पास जा रहा है, देन आपका वाई भी इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। एंड अगर आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, देन आपका वाई भी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इसकी भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, देन आल्सो वी हैव टू रूट्स, दो रूट्स होंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट जीरो है और ए लेस देन जीरो है, तो एक रूट होगा। और अगर वो दोनों नेगेटिव है तो एक भी रूट नहीं है, एंड द ग्राफ इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ओके। सो नाउ अभी हम पॉलिनोमियल पे पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर हम उसकी बात करें, इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट्स और द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको जीरो कर देंगे, तो हमारा जब y जीरो है, जिस x पे हमारा y जीरो है, वो हमारा रूट या फिर जीरो बन जाता है। ठीक है, एक बार और थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, जनरल फॉर्म वापस एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, जिसमें ए आपका जीरो नहीं होता है। ए इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, बी इज द मिडिल कोएफिशिएंट एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सब बहुत बेसिक चीज है, तो आई विल नॉट गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट, ये आपको पता होगा। सो डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स, सो दिस इज समथिंग काइंड वी कैन स्टडी एंड लुक अबाउट कि कैसे करते हैं। सो व्हेन 13 is divided 5 divided by 5, we get a quotient of 2 and a remainder of 3. So look, how do we divide, similar to division of numbers. तो अगर हमें दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है तो हम उनको एक, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है, उससे कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हैं अभी अपन, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 दे रखा है, और हम उसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो पहले अपन करेंगे 3x, 3x से मल्टीप्लाई तो आपको पड़ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, देन वी हैव अ रिमाइंडर ऑफ 11x माइनस 8, एंड देन we'll take 11, and then 11x minus 24 and 14. So what our equation would look like after division, this is what we remain with. So our quotient becomes 3x plus 11 and the remainder becomes 14. Okay, consider fx is equals to x minus r qx plus r. This is the remainder theorem, very basic. This you might have studied in your junior classes also. So note that if we take x is equals to r, the equation becomes r. This leads us to remainder theorem, which states if the polynomial x divided by x minus r and the remainder r is obtained, then f of r is equals to r. This is very simple, nothing out of the box. I don't think a theorem should be named, like it should be remembered as a theorem. But since it is named as a remainder theorem, you can remember that what does it mean. That's all. Moving on. Use the remainder theorem to find the remainder when is divided by this. Okay. So what do we put? We put x is equals to 2 here. As simple as that. We put minus 4 here. Okay, so you find a direct user कि अगर हमें कोई रिमाइंडर निकालना डिवाइड करने पर तो कैसा होता है। ओके, रिमाइंडर थ्योरम का हमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट यूज दिख गया यहाँ पे। Yes. Now moving on, what do we have? Factor theorem. Factor theorem states that if the remainder f of r is equals to r is equals to 0, then f minus r is a factor of f of x. इसका मतलब ये है कि हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जीरो होता है, तो बेसिकली इट्स अ फैक्टर। इट्स एज सिंपल एज द नॉर्मल फैक्टर डेफिनेशन वी हैव फॉर नंबर्स आल्सो, कि अगर कोई नंबर है 7 और उसको हम कर रहे हैं डिवाइड बाय 2, बट यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। तो ये फैक्टर नहीं है, बट अगर अपन 6 लेते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, राइट। So we say that 2 is a factor of 6. Excuse me.
Okay, now moving on. Let's see another question. Find the remainder R by long division and by the remainder theorem. Okay, so by remainder theorem, we can easily check by putting as -4. And by long division, you can see what does long division would look like. This is the long division format and this is the remainder theorem format. Use the factor theorem to decide if x minus 2 is a factor of this. So here what you can do is you can put x is equals to 2 and see that f of 2 is equal to 0 or not. If it is 0, then we can conclude that x minus 2 is a factor. If it is not equal to 0, it is not a factor. If x is a real number such that x cube plus 4x is equals to 8, then find the value of expression x to the power 7 plus 64x square. Okay, so representing this as a product of this and solve some other polynomial plus constant term. Okay, what are we doing here is we're trying to make this a function of this. So we have altered this. Okay, moving on. A cubic polynomial p of x contains only terms of odd degree. If p of x is divided by x minus 3, then the remainder is 6. If p of x is divided by this, then the remainder is gx. Find the value of g of 2. Okay, so how do we move about that? अगर हम इसको p of x को x by 3 से डिवाइड x minus 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 3 है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि p of 3 हमारा 6 है. ठीक, अब हमें डिवाइड करना है इसको, p of x को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 9 से. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि p of x को पहले x माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं और फिर x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे. तो हमें पता है यहाँ पे रुको, लेट्स जस्ट वेट. अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं assumption के साथ, राइट? सो हम इसको अज्यूम करते हैं, काम करते हैं. हम एक नॉर्मल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, और हमें पता है ये पी ऑफ एक्स हमारा, राइट? तो हमें पता है पी ऑफ 3 हमारा है 6, यानी कि 27a प्लस 3b इज अ 6, राइट? अब हमें निकालना है x माइनस 3 के रिमाइंडर को. तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 रख देते हैं यहाँ पे अपन. तो लेट्स सी हमारी क्या वैल्यूज आती है. जस्ट अ मिनट. और कुछ गलत कर रहे हैं. आई डोंट गेट दिस पार्ट. We know p of 3 is 6, right? So we get a value. Fine, we get a relation between a minus b. Then they have written p of x, capital P of x, which is same only as
ओके, तो क्या करने की कोशिश करी है? ओके फाइन, आई गेट इट व्हाट दे ट्राइंग टू डू हियर। उन्होंने एक फैक्टर बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 के लिए। ओके, so what you see is this p of x is equal to ax cube plus bx only. They have added minus 9ax and subtracted minus 9ax to get a factor of x square minus 9. So if we get a factor, so हमारा रिमाइंडर क्या बन जाता है? This. और हमें वैल्यू निकालनी है g of 2 की, so we'll put a value of 2, so b plus 9a into 2, so we get an answer of 4. Okay, so now starting अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, solving quadratic equations using graphs, like methods of solving quadratic equations basically. और उसमें दो फॉर्मेट्स हमारे पास, एक तो ग्राफ्स एंड देन द algebraic form. Okay, so algebraic form is when ax square plus bx plus c divided by a gives us x square plus bxa by a plus c. Okay, so we get the value, which is simply making out values of x. See what does x looks like. अपन को पता है x क्या होता है, it's very basic. अपन को 10th क्लास में ही पढ़ाया था ये, right? So moving on, what do we see here? कि अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा आर बेसिकली रूट्स. So you can put some equations की sum of roots क्या होता है, product of roots क्या होता है, ये आपको पता होगा. Sum of roots is basically what? The middle term, the negative of the middle term divided by the middle coefficient, or product of coefficients क्या होता है? Just a minute. Okay, and product of coefficient क्या होता है? C by A. तो C क्या है यहाँ पे? The constant term upon the leading coefficient. Okay, now talking about the nature of the roots. The nature of roots also, roots are very important in quadratic equation. Roots can tell you a lot about the equation. For example, if a given for a given quadratic equation, if our discriminant is less than 0, then the roots are imaginary and given by alpha plus I beta and alpha minus I beta. But वहीं अगर हमारे d 0 हो गया तो हमारे रूट्स इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा. एंड अनदर केसेस जब हमारा d ग्रेटर देन 0 है. Yes, when the discriminant is greater than 0, then it will be rational. और अगर हमारे d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल बनेंगे बट रियल बनेंगे. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा ये तो वही एक्सप्लेनेशन है उसका, हमें जरूरत नहीं है आई थिंक इसकी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. दिस इज सेइंग, ये तो हम समझ गए. ये सारे पॉइंट्स आई डोंट थिंक दे हैव मच टू से. ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपना समझ जाएगा. अगर अपन को गो थ्रू करना है एक बार, सो लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट, सो देन थिंग्स विल बी क्लियर फॉर अस. सो अगर हमारा डी लेस देन 0 है तो नॉन नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे. डी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, वो रैशनल इरैशनल दोनों हो सकते हैं. अगर डी 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे. ठीक है, मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, हमारा लिखा है if a b c are integers, d is a perfect square of a rational number, then roots are rational number, and in case d is not a perfect square, then roots are irrational, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अगर abc रैशनल है और p plus iq is one of the root of the equation, then other root must be the conjugate. हाँ, अगर हमारा एक रूट इमेजिनरी है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा रूट रियल हो सकता है. अगर एक इमेजिनरी है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे और एक दूसरे से कॉन्जुगेट होंगे. ओके, यस. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, exactly one root of the quadratic equation is 0, then the product is 0.
the equation becomes ax square plus bx plus c. Of course, अगर हमारा एक कांस्टेंट को एक रूट जीरो है, मतलब आपका ग्राफ पास हो रहा है ओरिजिन से 0,0 से, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है एक ग्राफ को, देन c has to be 0. Okay. Yes. Moving on to the next point, what do we have? If both roots of the quadratic equation are 0, then s is 0 and p is 0, where sum and p is equation equals to square. It is a root is infinity, x square plus bx plus c. And let's see what does the other part of the question say. Important. Let's see some important concepts as well. The person is trying to convey, and let's yes, hide the person's name and continue. So another important conditions are that if ax square plus bx plus c is positive for all real values of x, then इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए तो पॉजिटिव है ही सही, पर अगर डिटरमिनेंट लेस देन 0 है, क्योंकि कभी भी वो एक्सिस उसको टच कर ही नहीं रहा है. ओके. अगर हमेशा नेगेटिव है, ऐसा ग्राफ है, वो भी टच नहीं कर रहा कभी भी एक्स एक्सिस को, डी तो हमेशा लेस देन 0 रहेगा, इसी क्योंकि उसकी रूट्स ही नहीं है. Next point. If both roots are infinity for the equation, then x is equals to y by 2, 1 by y, and right. Yes, roots in particular cases, when b is 0, ac is 0. This is something I you can understand by it yourself. कि जैसे कि फर्स्ट केस में दे रखा है कि b 0 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ सी बाय ए. तो आप समझ सकते हो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट साइड के होंगे. सी 0 हो गया तो क्या होगा, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो. I don't think there is something much to learn here. You can just understand it by solving. Yeah, let's start with this question. From a quadratic equation with a rational coefficient having cos square pi by 2 as one of its root. Okay. So if you are aware, the value of cos square pi by 2 is half of 1 plus 1 by root 2. So since it is an irrational number, what do we have? And multiplying by root 2. This is an irrational number, right? So when irrational numbers take place, so we have a conjugate as it is the another root. You must have read it, right? So here the other root would be like this. For irrational and imaginary both, the roots are one each other's conjugate. Okay, moving on. So if we get out the roots again, the equation, we know the sum of the roots of the roots. So you can easily do that. Now, equation with rational number with one of its roots is this. So what the actual root is, we'll take a that this will okay, just give me a minute. What are we trying to do here is root 5 minus 2 by 1.
So this is equal to this. So other root would look like root 5, sorry, minus 2 minus root 5. It is conjugate. Then the sum of the roots is minus 4 and product is minus 1. Okay. So now moving, if cos theta, sin alpha, sin theta are in GP, check the nature of the roots of this. So by GP we mean is that sin phi is equals to root of sin theta and cos theta. So I have to check nature of the roots, right? Checking the nature of the roots, what do we have here? That alpha plus beta is equals to 1. Sorry, alpha into beta is equals to 1 and alpha and beta is minus cot phi. So minus cot of cos phi by sin phi. So these are reciprocal of each other, right? And sin phi is positive. So alpha plus 1 by alpha is equals to minus 2 cot phi. And so they have calculated the dominant here. It's not an important. I can say, I think we just get back to it later on. Okay. Moving to the next question, what do we have? Form a quadratic equation with real coefficient with one of the roots is this. If one of the roots is this, the other root is 2 plus I. So sum looks like 6. Ka whole square and this is 30. So we have is x square minus 6x plus 30. Moving to the next part, we have if P, Q, R are positive rational numbers such that P is greater than Q, Q is greater than R, the quadratic equation has root minus 1 and 0. Find the nature of the roots of this. Okay. So हमें पता है कि जो roots है यानी कि sum of roots है जैसे कि Q plus R minus 2P upon P plus Q minus 2R with the whole minus sign is equals to minus 1. So minus minus sign would get cancelled. And since this is negative, this is positive. So ये तो गलत हो गया. P minus R positive है, Q minus R positive है. Minus P plus Q negative है, minus R minus P negative है. Then we are missing something. ये पूरा टर्म नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे है? So let's not go there. Q plus R minus 2P is equals to P plus Q minus 2R. So Q and Q gets cancelled and we are left with minus 3P is equals to minus 3R. So P is equals to 3. Has a root in. Okay, so we went the complete wrong way. So the question states कि जो एक रूट है वो -1 और 0 के बीच में है, बाकी दूसरे रूट का हमको नहीं पता. तो अगर हम वापस से सम ऑफ रूट्स देखें जैसे कि अल्फा प्लस बीटा देखें, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ क्यू प्लस आर माइनस 2p, p प्लस क्यू माइनस 2r. ये नेगेटिव है
ये पॉजिटिव है, सॉरी उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, बट देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो ये होल टर्म हो गई पॉजिटिव। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो तो है पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें पता करना है कि प्रोडक्ट क्या है। तो लेट्स सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, इरेज कर देते हैं पहले ये। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय आर प्लस पी माइनस टू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू माइनस टू आर। तो अब हम बोल सकते हैं पी माइनस क्यू पॉजिटिव है बट माइनस क्यू आर नेगेटिव है, और इन दोनों का सम क्या होगा हमें नहीं पता। बट हमें पता है कि एक रूट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता। बट दूसरे को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है। तो अगर हम अल्फा को नेगेटिव मान के चले तो दूसरा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, हमें पता लग गया कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। सम और रूट्स इनका सम नेगेटिव है, इनका सम नेगेटिव है मतलब ये तो पॉजिटिव है। और हमें पता है कि p माइनस क्यू पॉजिटिव है प्लस माइनस ऑफ क्यू माइनस आर। तो अगर हम इसको नेट को नेगेटिव करना है तो ये बड़ी टर्म होनी चाहिए। तो हमें पता है क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन p माइनस क्यू। इसका मतलब हो गया टू क्यू इज ग्रेटर देन p प्लस आर। अब हमें क्या पता करना है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इसका निकालना है ना। तो हमें पता है कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल्स टू टू क्यू बाई पी माइनस टू क्यू बाई पी एंड अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज आर बाई पी। 2 सेकंड इनका आंसर देखते हैं। ने डी कैलकुलेट किया है ना, तो हम उनको भी ये निकालना है पॉजिटिव है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं डी निकाल के। डी क्या है अपना, फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर। तो फोर कॉमन ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बचता है। बट हमें पता है कि Q इज ग्रेटर देन टू क्यू इज ग्रेटर देन P प्लस आर। मतलब ये AM की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और हमें पता है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, राइट। हमें पता है कि PR बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ऑफ PR। तो Q इज ग्रेटर देन रूट ऑफ PR। तो ये पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। समझ आया। हमने देखो क्या किया पहले, हमने इक्वेशन निकाली और हमें पता लग गया कि एक, पहले हमने सम देखा। स्टार्टिंग से अगर इस क्वेश्चन को रिकैप करें तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हमने इसका देखा सम ऑफ रूट्स क्या है। तो हमने ले लिया अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया अपना सम ऑफ रूट्स, जो कोएफिशिएंट का होता है रेशियो हमने ले लिया, और हमको उससे पता लगा कि जो नेट सम है वो पॉजिटिव है। नेट सम पॉजिटिव है और हमें पता है कि एक रूट जो है वो जीरो और माइनस वन के बीच में है। तो दूसरे रूट को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो हमें पता लग गया कि दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव साइन का है, क्योंकि दो रूट से एक पॉजिटिव और नेगेटिव है और उनका प्रोडक्ट करना है तो नेगेटिव प्रोडक्ट होगा। वो कर दिया हमने, एंड देन नेगेटिव प्रोडक्ट को कोएफिशिएंट से रिलेट कर दिया। तो हमको वहां से इक्वेशन मिल गई कि टू क्यू जो है वो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस आर है। और ये काफी एम जैसा लग रहा है, राइट। क्यू इज ग्रेटर देन पी प्लस आर बाई टू। तो दिस इज एम बिटवीन क्यू आर एंड एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, राइट। सो क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ऑफ पी आर। तो इससे हमें मिल जाता है कि क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी आर, और वो हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट है। समझ आ गया। Yes, moving on to the next part. Consider the quadratic polynomial fx is equals to x square minus px plus q, where fx is equals to 0 has prime roots if
p plus q is equals to 11 and a is equals to p square plus q square. Find the value of f of a where a is an odd positive integer. Okay, तो हम पहले क्या करते हैं, इरेज करते हैं, क्योंकि p और q में अननेसेसरी कॉन्फ्यूजन होगा वरना. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 11 माइनस पी. ये एक इक्वेशन हमने इस्तेमाल कर ली, इज इक्वल टू 0. अब हमें पता है प्राइम रूट्स है, तो डिटर्मिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा डिटर्मिनेंट को इन एनी केस, तभी जाके हमारे पास एक प्राइम रूट मिलेगा. ओके, ओके. तो मूविंग ऑन, हमें दे रखा है कि अल्फा अगर हम एक रूट माने तो अल्फा प्लस बीटा इज पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज 11 माइनस पी. अब हम इसको सॉल्व कर, हमें पता है अल्फा बीटा प्राइम है. ठीक, इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, इनको सम कर देते हैं तो हमें बन जाएगा अल्फा, ये हमारे पास बन के आ जाएगा और एक वन और ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, है ना. विदाउट वन वुड नॉट वर्क, सो इट इज 12. अब अगर हम देखें तो ये 3 और 4 में बन सकता है, 6 और 2 में बन सकता है. बट अगर 6 और 2 में करेंगे तो हमारे अल्फा बीटा प्राइम नहीं रहेंगे. बट 3 और 4 करेंगे तो हमारे अल्फा बीटा प्राइम रहेंगे, जो कि अल्फा बीटा क्या बन जाएंगे हमारे 2,3. हमारे पास हमारे रूट्स आ गए, तो हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आ गई. पी की वैल्यू हो गई 5, क्यू की वैल्यू हो गई 6. राइट, अब हमें निकालनी है 25 प्लस 36, पी एफ ऑफ 61. एफ ऑफ 61 कैलकुलेट करना है, जो कि हम इजीली 51 एज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नहीं, देयर इज अ इशू, ये गलत करा है. इट इज 61. f of 61, 25 plus 36 is 51, right? No, it is 61. 61 आएगा यहाँ पे, गलत हो गई कैलकुलेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इरेज कर लेते हैं पहले. एंड दिस इज रॉन्ग गाइस, यहाँ पे 61 आना चाहिए. अब खुद देखिए, 25 plus 36 is equal to 61, not 51. Okay. Find the maximum vertical distance d between the parabola and the line to the bounded region in the figure. ओके, सो अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है किसी भी दो पैराबोलास के बीच में, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए. बाय वर्टिकल दिस सिंपली मीन दिस वर्टिकल. तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों वाइज सबट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि वो किया है सॉल्यूशन में. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ डी, और डी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, सिंपल. तो फर्स्ट एक इजी तरीका इसको हो सकता है कि आप डिफरेंशिएट कर दो. ठीक है, बट हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको आराम से आपकी वैल्यू मिल जाएगी. -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हाफ. अब हाफ पुट कर, व्हाट. अच्छा 4 है यहाँ पे, सॉरी. वही, आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग यार. इट इज 4. लेट मी जस्ट erase that a bit. Like wherever I'm going wrong, so it is -4x plus 3 is equal to 0, so it becomes 3/4. You can simply differentiate it and get the maximum and minimum, guys. It's very easy. We have done differentiation, guys. You can check out the differentiation video. We have done that. Okay. Moving on to the next question we have.
ax square plus bx plus c has no real roots. We have to prove that c into a plus b plus c is greater than 0. What can you say about the expression? It's very easy. Has no real roots का मतलब ये होता है कि कोई real root नहीं है, तो मतलब imaginary roots है. ठीक है. अगर imaginary roots है तो दो कंडीशन हो सकती है कि हमारा, इसको पहले पूरा इरेज कर देता है, लेट्स नॉट कीप डर्टी, आप डर्टी. तो दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो ग्राफ ऐसा है या तो ऐसा है. ठीक है. अब हम कंडीशंस लगाते हैं. पहली कंडीशन लेते हैं, जब ए हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा कि एफ ऑफ, ये आप देखें ध्यान से तो आपको दे रखा है एफ ऑफ 0 दे रखा है एक, और एफ ऑफ 1 दे रखा है. तो दोनों केस में वो पॉजिटिव होगा. अगर अपन लेते हैं ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है और एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है. दो पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. अब दूसरा केस, ए नेगेटिव है, एफ ऑफ 0 नेगेटिव है, एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है. वी गेट आवर आंसर. नो रियल रूट का यही मतलब होता है कि इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या होगा कि आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है या तो हमेशा नेगेटिव है. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर. ठीक है. तो this is also easy question. This is something separation of variables and separation of coefficients that we did earlier. इसमें हमने ऐसा किया है कि जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, उसके अंदर हमने 20, हमारी जो ये वाली इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 0 है. तो हम वो अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर काफी आसान हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाट दे हैव अप्लाइड हियर एंड सॉल्व. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y is equals to ax square plus bx plus c, जो हमेशा पॉजिटिव है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन रियल डोमेन. सो हमें प्रूव करना है कि जो पॉलिनोमियल है z is equals to y plus dy by dx plus d डबल डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is also greater than equal to 0. तो हमें पहली चीज तो पता लगती है कि जो y है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव है. ठीक है. तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं कि, एक बार कैलकुलेट करते हैं, हमारा dy by dx कैसा लग रहा है, 2ax प्लस बी. ठीक है. और हमें पता है कि हमारा बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac है. ओके. तो पहले कैलकुलेट कर ही लेते हैं. हमारा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 2 है. देन वी गेट द पॉलिनोमियल, कि हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. ठीक है. एंड नाउ अगर हमारा a पॉजिटिव है और बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac है, तो इस नई वाले इक्वेशन का डिटर्मिनेंट क्या बन के आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर. ये ऑलरेडी नेगेटिव था ही सही, हमने उसमें से एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो और नेगेटिव ही होगा. तो अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है, देन ये हमारा नया एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा. वेरी इजी टू सॉल्व गाइस, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स आई सपोज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Yes, let's move to the next part. What do we have here? If the quadratic equation QE is formed, just a minute, let's check the time first कि हमारा theory part हो जाए. We have time, we have a lot of time. Okay, so moving to the next part, we have, if the quadratic equation QE is formed from y square is equals to 4x and y is equals to mx plus c and has real roots, then the relation between QAM. Okay. So, okay, we'll try to remove the variable of y here. And what do we get here? We get this equation. I'm not writing the equation and solving it for you guys. I hope you understand it. I'll highlight it for you guys rather. This is the equation that we get. 4x plus 4y plus 2 plus 4 plus 4 plus 2 plus 4 plus 4 plus 2 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 plus 4
what did we do here is we did put the value of y in x and got the equation in terms of m, c, and a. And now we know if we have equal roots, then d has to be 0. We put that condition and get our answer out. Okay. Now prove that the roots of the equation ax square plus bx plus c are given by this. Very easy. It is nothing out of the box. If we multiply it with its conjugate, we get this value only. Let's move to the next question we have. Let f of x is equals to ax square plus bx plus a, which satisfies the equation f of a x plus 7 by 4 is equals to f of 7 by 4 minus x. The equation, then the equation has only one solution. Find the value of a plus b. Okay, so let's read the solution once. As f of x has only one solution, that is d is equals to 0, and f of x plus 7 by 4 is equals to f of 7 by 4 minus x. Hence, solving these two equations simultaneously, we'll get the values of a and b. Given that f of x is equals to, okay, okay, so we solve by putting the value of x plus 7 by 4 and 7 by 4 minus x in the equation. And what do we get? We get this equation as a result. I'll circle that for you. This is the equation that we get as the result. And now it is saying that f of x, 7x plus a, has only one solution, that is d is equals to 0 here. So let's solve. If we write ax squared plus bx plus a is equal to 7x minus plus a, and then take out the dominant and take the dominant is equals to 0. So that gives us x square into b minus 7's whole square is equals to 0. So here b has to go to 7, right? Because x can go from any real value to any real point, like minus infinity to infinity. So it won't be equal to 0. But here we can go make it 0. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको 0 कराना है इसको, तो we can simply write b as 7. So we get a value of b. Then the other value is we get from 7a plus 2b is equals to 0. अगर वो 7 है तो a की वैल्यू -2 होगी. Then we get a plus b is equals to 5. Okay. Moving to the next part, if the equation 2x square plus 4xy plus 7y square minus 12x minus 2y plus t is equals to 0, where t is a parameter that has exactly one real solution of the form x comma y, then find the value of x plus y. Okay. Okay. So what we do is we convert this whole equation in form in terms of a quadratic equation of x. So what we have done here is we have written 2x square, we have taken 4x, then y minus t becomes the coefficient of x, and then plus 7y square minus 2y plus t is our constant here. So now taking d is equals to 0, what do we get? That b square, so 16 y minus t is whole square minus 8 of this is 0. So we get another quadratic equation in y, right? So exactly one solution, right? In the form of y of x. So again, इसका भी solution जो होगा हमारा d, एक ही solution मिल रहा है x और y के लिए, तो ये y भी एक ही solution देगा, and that will get at d is equals to 0. So we take d is equals to 0 here again and solve the question. Okay. So now this was, we are done with algebraic part of the solution if you guys get it. Uh, So we'll try to complete the graphical part in the next upcoming lecture. अगर किसी को भी इस वाले lecture में कोई doubts हो तो बता सकते हैं. I think I'll recap the methods that we did here एक बार वापस से, क्योंकि I think it could go over the head. तो क्वेश्चन हमें कह रहा था कि कह रहा है कि यहाँ पे t सिर्फ एक पैरामीटर है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और उन्हें दे रखा है कि x और y का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है.
तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम तो पहले कोशिश कर सकते हैं कि y को ले लें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह पहले, एंड देन सॉल्व करें, या तो x को ले लें। तो सोल्यूशन के अंदर व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन x एज द क्वाड्रेटिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको सॉल्व करने पर हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है y के अंदर, जिसका सोल्यूशन भी एक सिंगल सोल्यूशन है, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है। उसको सॉल्व करने पर वी गेट अ इक्वेशन इन टी, और जिससे हमें एक टी की वैल्यू मिल जाती है जो कि है 23। तो आपको वी गेट अ इक्वेशन इन वाई, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद y की वैल्यू पुट करने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। Okay, let's recap at once what we studied. So we were studying polynomials. तो हम polynomials के अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा, जिसमें हमने देखा कि कोई भी अगर हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हम उस फंक्शन पॉलिनोमियल का आर वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब अगर x माइनस आर को डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एफ ऑफ आर लिखना है। सिमिलरली हमें पता करना है कि फंक्शन उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ आर को जीरो कर देंगे, मतलब रिमाइंडर शुड गो टू जीरो। यस, नाउ टेकिंग अदर थिंग्स इनटू कंसीडरेशन, उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है हमने, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। तो हमने अलजेब्रिक के कुछ क्वेश्चंस डिवाइड किए कि हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक का रूट रैशनल है इरैशनल है, तो कॉन्जुगेट होते हैं कि नहीं होते हैं, imaginary complex है तो conjugation कैसे होता है। These are all things that are very important for discussing quadratic equations. तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल पार्ट कवर करेंगे। अगर इफ यू वांट अ हिंट ऑफ इट, लेट्स गो थ्रू व्हाट द ग्राफिकल पार्ट लुक्स लाइक। This part we I think we can cover, right? So let's just see through what the graphical approach is. अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें पता है y की वैल्यू क्या होती है, राइट? वी नो व्हाट y लुक्स लाइक। अगर हम उसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें और एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले आए, तो हमें पता लग जाता है कि हमें x की वैल्यू क्या चाहिए जब हमारा y जीरो थिंग इज। So I hope that that works for you. And if there are any doubts, you can comment down in the video. I'll try to solve them there. Thank you, guys.